आपकी भी आप स्टार्ट मैं डेट नॉट नहीं कर रहा है आपकी मैं तैयारी दे तो मैं आपको नहीं करो, मैंने अभी वो स्लाइड शो ऑफ की। आपकी क्या आपने अंडरग्रेड वाला काम किया और मैं शरीर में से डिस्कस करके और शरीर में डिस्कस करना और कंडीशन आप दोबारा वो रिकॉर्ड पे जाओ। हाँ अभी तक वो प्रो नहीं आया इसको, अब करें। ये फिर प्रेजेंटेड हुआ, ये करें। जी सर अभी कर लेते मॉनिटर करें प्लीज। अब मैं बोल रहा हूँ। Bismillahirrahmanirrahim. Dear all participants who have joined us, we'll be starting our presentation in a few minutes. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to have our session on epiglottitis in Croup, which is going to be presented by Dr. Aksa Yaqub, who is a trainee registrar in our department. So now I would like to invite Dr. Aksa to begin her presentation. Assalamu alaikum. My name is Dr. Aksa and today's topic of my presentation is epiglottitis and croup. Now we will discuss one by one each. Epiglottitis, also known as supraglottitis. What is epiglottitis? Glottitis is inflammation. Epiglottitis is an inflammatory condition of epiglottis or the nearby structures, including the arytenoids, epiglotic folds, and the varicula. It's a life-threatening infection. Epiglottitis is a chronic inflammatory condition of the epiglottis or the nearby structures, including the arytenoids, epiglotic folds, and the varicula. It is a life-threatening infection.
Causative organisms are different in children and adults. In children, the most common causative organism is H. influenza type B, which is common in about 90% of the cases. Others are beta hemolytic streptococcus, streptococcus pneumoniae, E. coli, Klebsiella, and Neisseria species. In adults, H. influenza causes epiglottitis in 20% of the cases. Others are Candida albicans in immunocompromised patients. Patients with increased mortality, such as diabetes, hypertension, cardiac, and respiratory conditions, increase mortality in these patients with comorbs. Non-infection causes of epiglottitis include thermal causes, causative agents, which are most likely chemicals, foreign body ingestion, and chemotherapy. In the past, epiglottitis was thought to be primarily a disease of young children, but now adult cases are also reported since the addition of H. influenza vaccine in the infant immunization schedule. What is the pathophysiology of epiglottitis? Infection of the epiglottitis can lead to marked edema and swelling of the epiglottis and supraglottic structure of patients of any age. This is inflamed epiglottis. The edema can rapidly spread to adjacent structure, leading to rapid development of airway obstruction symptoms. Swelling of the upper airway leads to asphyxia and respiratory arrest. Here, inflamed epiglottitis result in obstruction of airway. The epiglottis enlarges, it curls posteriorly and inferiorly and limits the patency of airway. Now, clinical presentation, the child will present with symptoms of 4 days, which are dysphagia, dyspnea, distress, and drooling, cervical lymphadenopathy. The typical picture child presented with epiglottitis would be tripod position. Child will likely to be sitting upright with the mouth open in a tripod position, which can be shown in this picture. Both hands on the bed, possibly have a muffled voice. Red flags in case of epiglottitis would be intercostal or subcostal recessions, tachypnea, cyanosis, stridor, and respiratory failure. Pharynx examination to rule out other pathologies such as tonsillar or the paratonsillar infection. But avoid an examination of throat with a tongue blade or flexible laryngoscope, so it may result in the loss of the air. Radiographical picture would show a thumb sign, we can see in this picture, resulting in the narrowing of the airway and difficulty breathing. Other investigations would be CBC and blood cultures, flexible fibro-optic laryngoscopy. It should be done in a very strict environment, should be done in operation theater in the presence of experienced anesthesiologist. The findings would be inflammation of supraglottic structures, thickened airy epiglottic folds, and obliteration of vallicula. Ultrasonography usually not recommended, but if done, will reveal an alphabet P size in a longitudinal view. CT scan if associated complications such as abscess is suspected. Endoscopic video of epiglottitis. Endoscopic video showing swollen epiglottis and epiglottic folds. So, as we can see, the epiglottis, which is swollen, and the vallicula as well. How to manage a case of epiglottitis? It should be multidisciplinary approach.
epithelial cover. Alternative drugs are clindamycin and cefotaxime. Systemic corticosteroids, analgesics such as aspirin, ibuprofen, and acetaminophen. Nebulization with adrenaline. Adrenaline will causes bronchodilation. Improvement within 24 to 48 hours after medical treatment. Any need of intubation? Yes, in case of severe respiratory distress to secure the airway. But prolonged intubation is typically unnecessary because the edema usually subsides within 48 to 72 hours. When to extubate? Criteria for extubation include decreased erythema and swelling of the epiglottis on laryngoscopy, development of an air leak around the ETT. Any need of tracheostomy? Yes, but very rarely. In very urgent cases where patient presented at later stage with compromised airway. In a database, only 3% cases of adult epiglottitis with tracheostomy are reported. Systemic acute epiglottitis, if suspected, first we will go with medical therapy, as we discussed earlier. If airway is compromised, then it's safe to ventilate and intubate and can pass ETT tube. If unsafe to ventilate and intubate, then go for tracheostomy. Continue medical therapy and decannulate when safe. Here is a complication of epiglottitis, which is epiglottic abscess, seen in about 4 to 27% of the cases. It's most common on the lingual surface. Surgical drainage is needed in the presence of experienced anesthesiologists due to potential rupture, and abscess can obstruct the airway. Complications would include cellulitis, empyema, epiglottic abscess, cervical adenitis. Lower respiratory tract infections such as pneumonia, pulmonary edema, and respiratory failure would occur in case of superadded bacterial infections. Septic shock, prolonged ventilation might lead to death, but mortality rate of epiglottitis is less, around 7%. Omega epiglottitis. It's a normal anatomical variant in children in whom the epiglottis is floppy, vertically positioned, and resembles the capital Greek word letter that is omega. May be misdiagnosed as epiglottitis. So keep that in mind. Laryngotracheobronchitis, that is Croup. What is Croup? It's a respiratory illness. As the name shows, laryngotracheobronchitis, it involves the larynx, trachea, and the bronchi, characterized by inspiratory cough, stridor, and the hoarseness. Symptoms variable in children and infants. The hallmark is barking cough, and in adult, it would be hoarseness. What is stridor? High-pitched monophonic sound made when breathing. Entry of virus, it will activate over immunosystem such as white blood cells will be activated, resulting in swelling of the larynx, the windpipe, or the voice box. Turbulent noisy airflow known as stridor. It is due to oscillation of narrowed airway, and its presence suggests significant obstruction of the large airway. A child with the inspiratory stridor. And the bronchi, characterized by respiratory cough, stridor, and the hoarseness. Symptoms variable in children and infants. The hallmark is barking cough. The term Croup has been used to describe a variety of upper respiratory tract infections, such as laryngitis, which is an inflammation limited to the larynx, manifest as hoarseness. Laryngotracheitis, in which there is an involvement of larynx and trachea. Barking cough would be a hallmark. Laryngotracheobronchitis, bacterial tracheitis, bacterial infection of subglottic trachea resulting in thickened mucopurulent exudate, and spasmodic cough. Spasmodic cough is also known as frequent recurrent of Croup.
Sudden onset of inspiratory stridor at night, short duration and sudden cessation. It would be without fever and inflammation. Causative organisms. Croup is usually caused by viruses, which are para-influenza, respiratory syncytial virus, measles, influenza virus, rhino, and herpes simplex. Children 6 to 36 months of the age, and the weather would be early winter, September, October. Family history of croup is very important because it's a risk factor for croup and recurrence of the croup. Pathophysiology of croup. As we can see here, the viral pathogen when inhaled causes inflammation of subglottic area, mucosal edema, increased mucus production, resulting in narrowing of the internal airway and difficulty breathing. Clinical assessment. History and physical examination is very important, but first make the patient comfortable. Symptoms are perceived as being worse at night. Symptoms typically resolve within 3 to 7 days, but can last up to 2 weeks. In history, the point is very important because there is an association between recurrent croup and GERD. Now, how the child presented to us, it would be hoarseness or the barking cough, nasal drainage, sore throat, tachycardia, tachypnea, sometimes low-grade fever, stridor on activity. Difficult presentation in cases of more severe cases. Poor air entry, inspiratory and expiratory stridor at rest, visible suprasternal, intercostal, and subcostal recessions. Respiratory arrest may occur suddenly during an episode of severe cough. Hypoxemia, that is decreased level of oxygen in blood, leading to increased level of carbon dioxide in blood, that is hypercarbia. Child with whoopee cough video. Red flags in case of croup. Sinuses, that is bluish skin or the lips, lethargy or decreased level of consciousness, labored breathing or tachycardia, toxic appearance, drooling or dysphagia, fever in a child under 3 months of the age, unless due to vaccination. It is a scoring system. If a child presented to us with the croup, we should consider these 6 parameters. That would be chest wall retraction, stridor, cyanosis, level of consciousness, and air entry. Now, if the score would be between 0 to 3, it's mild croup. 4 to 7 would be moderate, and greater than 7 referred to as a severe croup. Management of these would be different. Another video with a croupy child is a distinct seal-like barking cough. Toxic appearance, drooling or dysphagia, fever in a child under 3 months of the age, unless. How to diagnose? CBC, raised WBC's count. X-ray neck AP view shows subglottic narrowing, characteristic steeple sign. Pulse oximetry determine the percentage of oxyhemoglobin in blood. Radiograph showing narrowing of the airway, that is the steeple sign here we can see. Flexible fibro-optic laryngoscopy in patient with uncertain diagnosis must be performed with extreme caution to avoid inducing airway obstruction. Findings would be edema, narrowing of the vocal cords, and subglottis. Management. Keep the child calm. Make him comfortable first. Cool mist humidifier, steam, antipyretics, encouragement of fluid intake, and single dose of oral dexamethasone should be given. In case of moderate to severe cases, admit the patient, supportive care such as humidification, supplementation of oxygen if saturation is less than 92%, strict vital monitoring, and fluids. Pharmacotherapy is important, such as corticosteroids, which would be 0.6 mg per kg, maximum dose is 10 mg, beneficial due to its anti-inflammatory action.
Nebulization with epinephrine. Epinephrine, well, its alpha adrenergic effects causes vasoconstriction and bronchodilation and resulting in decreased mucosal edema. Antibiotics usually not needed, but in case of secondary bacterial infections, broad spectrum antibiotics should be given to the patient. Helix, a gas contained of mixture of oxygen and helium. It reduces work of breathing due to its low viscosity and low specific gravity. Helps relieve respiratory distress by promoting gas flow through the partially obstructed airway. Endotracheal intubation in case of persistent severe airway compromise should be done in operation theater, and the size of ETT should be half the size smaller than the estimated. But it's rarely required. Only less than 1% cases of the child admitted to the hospital required intubation. Prognosis is very good because patient almost always go home with complete recovery. Symptoms usually improve within 3 days but may take up to 7 days. Most patients can be managed successfully as outpatients without the need for hospital admission. Hospitalization rates vary, averaging at 2 to 5% of the cases. Complications are uncommon, but in case of superadded bacterial infections, complications might include pulmonary edema, pneumothorax, and pneumomediastinitis. And patient might get dependent to oxygen because of not maintaining saturation at room temperature. Here is a quick difference between croup and epiglottitis. Croup, which we all know, also known as laryngotracheobronchitis, the age of onset is 6 months to 3 years. That is, it mostly affects the infants, gradual in onset and viral etiology. Whereas epiglottitis affects older children 2 to 6 years of the age, rapid in onset and bacterial etiology. Swelling site would be different. In croup, it would be subglottic. Epiglottitis would be supraglottitis. In croup, the typical symptoms is hoarseness and barking cough, whereas in epiglottitis, there would be no cough, muffled voice would be seen. Posture, as we know, epiglottitis child presented with tripod position, appearance would be anxious, acutely ill. Radiographic examination of croup would be narrow subglottic area. As we know, we see the steeple sign. In an epiglottitis, it would be swollen epiglottis area, that is the thumb sign. On examination, palpate the larynx, it would be tender in epiglottitis, and recurrence may occur in croup, and the seasonal incidence is most related to croup as compared to epiglottitis, which can occur in any season. Mortality rate of croup is less than 0.5% and death of epiglottitis is 7%. Clinical characteristic of children and adolescents with croup and epiglottitis who visited 146 emergency departments in Korea. A article published in NHS. The abstract was to compare the clinical characteristics of croup and epiglottitis in emergency department patient. According to it, the conclusion was epiglottitis patient had a lower incidence rate, higher mean age of onset, and higher hospitalization rate as compared to croup. And symptoms in epiglottitis were dyspnea, sore throat, and vomiting more often than the croup patients. Results may be helpful in different diagnosis of croup and epiglottitis. Thank you. Thank you, Dr. Aksa. The presentation was wonderful. Now we'll start our question answer sessions in a couple of minutes. आपको समझ आ गई? Yes, sir. So ये बताइए, what are the general principles to deal a pediatric patient presented to you with stridor? क्योंकि हमें गाइडलाइंस बता दीजिए कि जब भी कुछ स्ट्राइटिस का मरीज आ जाए, स्ट्राइटिस का पेशेंट रिपोर्ट करे, सो हम क्या करें? What to do? Or oxygen should be done with pulse oximetry. If the oxygen level is low, then supplemental oxygen should be given to the child.
And physical examination, we will see the any subcostal or intercostal recessions. After making the patient comfortable and providing him supplemental oxygen if needed, we will look the course of the stridor. Yes. Then we'll treat according to it. So ये कहने का मतलब है कि आप पेशेंट को सबसे पहले वाइटल मॉनिटर करें, सर उसकी ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के बाद सबसे पहले सप्लीमेंटल उसके ऑक्सीजन एयर को, यस सर, एयर sir, ICU care should be needed. Pediatric ICU या pediatric emergency. Yes. सबसे पहले तो मेरा पकड़नी है Yes, sir. कि वो पेशेंट नहीं है जिसको आपने देखा है और आपने भी basis पे। ICU वगैरह तो उससे दूसरा पेशेंट ऑक्सीजन लीड कर रहा हूँ माइल्ड स्टैंडर्ड हो लेकिन अभी मैं छी आप कहता हूँ सीरियस so पहला principle for all these patients especially pediatric patient presented to you with stridor Admit the patient. admit the patient तो दूसरा क्वेश्चन है वेट कहाँ पे करें the ideal environment is a pediatric ICU जहाँ पे pediatric ventilator pediatric ETTs pediatric bronchoscope pediatric pediatrician nice interventionist वहाँ पे available ठीक है ऐसे पेशेंट को उस सेटअप में ना उनके साथ मैनेज करने की कोशिश करें जिसमें आपके पास बैकअप ना हो बिल्कुल समझ रहे हैं कि आपने पेशेंट में बताया कि आपको चाहिए ENT diagnosis for management pediatrician बिल्कुल ICU interventionist anesthesiologist. and pediatric assistant. ये तो है basic prerequisites to head. Now what we have अब क्या करें पेशेंट आ गया है स्पाइडर है बिल्कुल सो सर एडमिट कर लिया पेशेंट को और वही सब कुछ ऑक्सीजन और बेसिक जो वाइटल मॉनिटरिंग है उसके बाद वी विल रूल आउट द कोर्स. Yes, sir. Because in case of group, if the patient so the next step is you will take a short history from the parents, yes, Yeah. and a quick physical examination. कि क्या हुआ था थोड़ा सा एक आइडिया Idea of it. ये इन्फेक्शन है wound है फॉर पार्टिकल नहीं Exactly. ऐसी बिल्कुल. तो how you rule out these two diagnoses whether a patient has some sort of infection or he has a need or he or she has a need some foreign body क्या हिस्ट्री होगी क्या फर्क है सिर्फ वेरिएंट्स हिस्ट्री से डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर ये तो. और समटाइम ये है कि फॉरेन बॉडी उस टाइम पे होगी तो उसी टाइम पे फॉरेन प्रेजेंटेशन होगी. बट इन केस ऑफ ग्रुप नाइट सिम्टम्स विल बी मोर डिस्निया एट नाइट और जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं वैसे सडन नहीं होंगी जैसे फॉरेन बॉडी में आ जाएगी. उसमें 2 to 3 days के बाद पेशेंट प्रेजेंट करेगा. तो यू मीन टू से कि इन्फेक्शन में बच्चे को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हिस्ट्री होगी पेशेंट बिल्कुल पास हिस्ट्री फीवर होगा अनहेल होगा यस लास्ट फ्यू आवर्स से यस सिम्टम्स होंगे उसमें. जबकि फॉर्मेट इंजेक्शन से स्प्रेड हो जाएगा बिल्कुल नॉर्मल अगर अचानक स्प्रेड हो जाए ठीक है ग्रुप में ये सिचुएशन दर्द हो जाती है समझ गए ओके. उसमें वो कह रहे थे पेशेंट बच्चा बिल्कुल ठीक था खेल रहा था और कुछ ही देर में ये स्प्रेड हो गया ऐसे सो व्हाट टू डू नेक्स्ट फिर आपने कहा कि ऑक्सीजन लगाने नेक्स्ट कर दे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का शॉट देते हैं. अब हमने इन्वेस्टिगेट करना है सर पहले तो थोड़ा सा चाइल्ड को कंफर्टेबल करें क्योंकि एक्सरे तभी होगा जब चाइल्ड कंफर्टेबल होगा एयरवे उसका सिक्योर होगा हमें पता है कि अब हम फर्दर लेके चल सकते हैं. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का शॉट लगाएं ताकि माइट भी वो जल्दी से एक्ट करके म्यूकोजल एडिमा को रिड्यूस करें और एयरवे जो है वो थोड़ा सा सिक्योर हो. Okay.
किस स्टेज पे आपने इन्वेस्टिगेट करना लाइक एक्सरेज कब करेंगे? व्हाट इज एप्रोप्रिएट टाइम? appropriate time. सर वाइटल्स पे ही है, अगर चाइल्ड स्टेबल है तो फिर उसको एक्सरे के लिए हम एक्सरे Stable है तो करेंगे। X-ray यस सर। stable है, but he is physically stable and for an extra provided to be out front for it, or if it is epiglottitis or to those by specific signs or मेरे बस ये है कि देखो ये जितनी भी क्रूप एपिग्लोटाइटिस इसमें डायग्नोसिस इज क्लिनिकल। ओके, तो जो एक्सरेज है वो आप कभी भी बच्चे को एक्सरे रूम में आईसीयू से आप कभी ना देखिए, और अगर आपने कुछ एक्सरे इन्वेस्टिगेशन करनी है इट मस्ट बी इन द आईसीयू और बेड साइड rather than you send the patient unattended to X-ray room. ठीक है, वहां पे मुझे लग रहा है कि बच्चा सीरियस हो सकता है, so not send to X-ray, try to make your diagnosis clinical at this spot, और वो clinically ही आपको diagnose बन सकते हैं। ठीक है, तो फाइब्रोटिक किस स्टेज पे करनी है? सर जब अदर रेस्पिरेटरी ट्रैक पैथोलॉजीज हमारे माइंड में हो, अनसर्टेन डायग्नोसिस हो। कैसे वेट पैटर्न पे करनी है, कब करें? नो सर, अब एक चाइल्ड में तो नहीं, आईसीयू में जाके एयरवे को सिक्योर करके उसके थ्रू फाइब्रोप्टिक लेंगे उसको। और पढ़ाने जैसे mention तो क्योंकि हो सकता है फिर आपको उसके फौरन बाद इंट्रोवेट करके बेड पे जहाँ डाला पड़ जाए। अगर देखिए जो अडीमा जब भी डेवलप होगा और आपको लगेगा कि स्पाइडर पर्सन हो रहा है, तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके कई दफा कि सिर्फ सैचुरेशन का लेवल नहीं हमने देखना होता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाए फॉलो। अगर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है बच्चे का और वो किसी भी तरीके से अपने एक्स्ट्रा एफर्ट करके सैचुरेशन मेंटेन किया करे जा रहा है, लेकिन कुछ आवर्स में रेस्पिरेटरी के लिए चलते हैं। ठीक है, तो गुड आइडिया कि आप से एक्टिवेट कर दें, दैट इज द सेफेस्ट, क्योंकि ये शॉर्ट इलनेस है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जो आपने स्टीरॉइड और एड्रेनालिन टेस्ट करवाएंगे तो बॉडी का रिजॉल्व हो जाएगा और कमिंग 24 to 48 आवर्स में इसकी रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन इज द सेफेस्ट रादर देन कि आप उसे भी ऑब्जर्व करें और फिर बच्चा कोलैप्स हो फिर आप उसे वेंटिलेट कर दें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मार्क स्ट्राइडर है तो बच्चे को बहुत ज्यादा लॉस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चों में जो रेस्पिरेटरी मसल है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते नहीं, वैसे भी उनका रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होता है। आप इस जेल में ना डालें बच्चे। ठीक है, अच्छा आपने इसमें मेंशन किया था कि डब्ल्यू स्टेज होगा। यस सर। और लेकिन फिर आपने कहा कि एंटीबायोटिक्स लेकिन शुरू में आपने बताया कि वायरल इन्फेक्शन होती है, तो फिर आप एंटीबायोटिक्स क्यों दे रहे हो? यस सर, सेफ साइड के लिए प्रोफाइलेक्टिकली सुपरेटेड इन्फेक्शन सेकेंडरी पैटर्न। तो दो प्रॉब्लम बच गए। पहला प्रॉब्लम स्ट्राइडर, सेकंड स्पेस ऑफ सिचुएशन हो तो रेस्पिरेटरी उसमें स्पेस ऑफ सिचुएशन हो। ठीक है, ऑफ के साथ साथ इसमें बच्चे को सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। अगर डब्ल्यूबीसी की रेस तक होगा ना तो अगर उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए यस तो हमने प्रोफाइलैक्टिक ऑब्वियसली एंटीबायोटिक्स को फॉलो शुरू करवा दें। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेरॉइड्स, नैब्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, यस तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि फौरन तौर पे इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है। पीएलसी 10,000 है, 18,000 है, नो मीन हमने उसकी ट्रीटमेंट तो दे रहे हैं कि रादर देन टाइम बच्चे को प्रिक करें, उससे मोर
एग्जीक्यूटिव फेज पे लेके जाए तो उसके मैनेजमेंट की तरफ मैनेजमेंट के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन आती है। बिल्कुल। ठीक है, फिर जब आपने डायग्नोसिस एस्टैब्लिश करना है तो फिर आप पहले लेकिन पहले आपने इसके केस की वैलिडिटी। अच्छा, तो आपने बताया कि ये खास एज ब्रैकेट की डिजीज है। यस सर। 3 to 6 months 36 months. 36 months, 3 months, 3 years. ये क्रूप के लिए Yes. होता है जिसमें रिंगबोर्ड ट्रीट्यूट Bronchitis. Yes. उसका वेरी शॉर्ट हिस्ट्री। Yes. ठीक है, 4 to 6 आवर्स में सारी एमरजेंसी हो जाती है। Yes. ठीक है, ये बताइए कि आपने हमें अभी बताया कि इनमें कब एक्सपेक्ट करें कि कॉम्प्लिकेशन की तरफ बच्चा जा रहा है, तो क्या ऐसे रेड फ्लैग साइन या हमें क्या हमें पता चलेगा कि कॉम्प्लिकेशन हो रहा है? तो ग्रुप में तो ये है कि हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं बट स्टिल टॉक्सिक अपीयरेंस है, ड्रूलिंग है, टेकिपनिया है, टेकिकार्डिया है और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो बच्चे का डिक्रीज है। उस कंडीशन में ट्रीटमेंट के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही चाइल्ड पे, तो मोस्ट लाइकली इट वुड बी गो टुवर्ड्स द कॉम्प्लिकेशंस एंड रिजल्टिंग इन कॉम्प्लिकेशंस। तो आपका मतलब है कि अगर सैचुरेशन रिवर्स नहीं हो पा रही फिर हम कैसे असेस करेंगे, एक्सरे करवाएंगे या सैचुरेशन सर फिर तो हम एयरवे सिक्योर करेंगे, एक्सरे तो फिर भी नहीं हम नहीं कर सकते। ओके ओके इंट्यूबेटेड। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 48 आवर्स हो गए, बिल्कुल, आप पेशेंट को एक्सट्यूबेट होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। एक्सट्यूबेशन की तरफ आ ही नहीं रहा, तो आपके ज़हन में क्या है? सर फिर लेंगोस्कोपी करके अंदर से एग्जामिनेशन करेंगे कि कहाँ पे इशू आ रहा है जिसकी वजह से जो है वो एडिमा या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो रिजोल्व नहीं हो रही। बच्चों में एयरवे काफी डिस्टेंट सेगमेंट्स नैरो होते हैं, उनमें कोई प्लग आ जाता है सिचुएशन का, ऐसे बच्चे के जरूरी है कि वो उसकी ड्रॉप करके उसमें एयरवे को वॉश कर सकते हैं, प्लग है वो कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये आप इंक्यूबेट करते हैं तो वो नॉन ब्लॉक तो उसी में सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, तो रादर देन कि आप उसी की वजह से सिचुएशन के लिए रिप्लेस करें। ठीक है, तो ड्रॉप करें, स्टिचेस करें, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करें, नमूनिया को करें, कभी भी स्पाइडर्स भी करते हैं, उससे प्रेगनेंसी बट बना के सर्वाइवल के लिए इन्फेक्शन की तरफ जा रहा है। सो और क्या चीजें हमारे लिए होनी चाहिए फॉर सेफ रिकवरी? सेफ रिकवरी सर सब कुछ हो गया, मेडिसिन भी दे दी और इंट्यूबेट भी कर दिया। अब साइंस देखेंगे एक्सट्यूबेशन के, वो नहीं हो रहा तो वी विल गो टुवर्ड्स रिजिड ब्रोंकोस्कोपी, उसके अकॉर्डिंग फिर। सो व्हाट डू यू थिंक आईसीयू से कब बाहर लेके आए? सर 48 आवर्स के लिए तो पेशेंट शुड बी विद इन आईसीयू। यस, एक्सट्यूबेशन, decrease edema, maintenance of saturation at room air, tachypnea settled, or presence of air around the ETT tube, air laying through the ETT. So obviously जब demand of oxygen like Yes sir. room air पे Saturation saturation maintain हो जाएगी, quietly stay हो जाएगा, पूरा free हो जाएगा, so it means free to move to board या free to discharge. Yes sir. ठीक है, so आपने वैक्सीनेशन का जिक्र किया, Yes क्या sir. चीज है तो हमें वैक्सीनेशन लगानी चाहिए, तो ये वायरल इन्फेक्शन ये है और जब से वैक्सीन पार्ट ये वापस बी वैक्सीन तब से जो ग्रुप है ना उसके इंसिडेंस डिक्रीज हुआ। इसमें ये नहीं कि एक्टिव इन्फेक्शन के दौरान वैक्सीन लेकिन एज प्रोफिलैक्टिक तो ये वैक्सीन लगती है जिसमें ग्रुप का इंसिडेंस कम एज कंपेयर्ड टू ये वैसे भी काम हो गया, मैं हर 2 साल के बाद ये देखती थी जिससे ये ग्रुप होता है, उससे ये डे 1 पे थोड़ा सा काम होता है, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स पे हम खुद ही शिफ्ट हो जाते हैं,
मोस्ट ऑफ द टाइम ऑगमेंटेड ऑक्सीजन तो पेशेंट लेके आता है तो इसके इसका काफी इंसिडेंस कम हो गया पहले इसलिए पेशेंट ज्यादा होते हैं अब ये काफी कम हो गया सीटी वगैरह के बारे में जरूर होती है Yes, sir. In case of complications such as epiglottic abscess. Epiglottitis Yes, sir. Epiglottitis, it leads to epiglottic abscess. सर अगर ऐसे होता है कि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते और आप कुछ ऐसी फॉरेन बॉडी सस्पेक्ट कर रहे हैं सो डोंट हेजिटेट टू डू HRCT टेस्ट ठीक है वो आपको पिन पॉइंट कर देता है समटाइम फॉरेन बॉडी इफेक्ट होती है छोटे बच्चों में आप उसका HRCT जरूर करवा लें अगर रिजॉल्व ना हो Yes. अदरवाइज स्मूथ डिजीज और आप एक्सपेक्ट करेंगे बच्चे ने तो जल्दी सही हो There will be extremely kind of about it. You know, for फिर तो उस वाले से करवाएंगे। तो दूसरे बात ये बताइए कि आपने ट्रैकोस्टमी का बताया ट्रैकोस्टमी का क्या स्कोप है इसके Sir, very less chances in case of severe airway obstruction. और पेशेंट आया है स्टाइलर के साथ एयरवे बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम लोकल एनेस्थीसिया के अंडर जो है वो उसकी ट्रेकोस्टमी कर देंगे एयरवे वैसे को। लोगों ने सीधा में काम मुश्किल है 3 साल 5 साल I have this question, sir. मेरा question है for senior TAs and anesthesiologists to treat the patient, shift to we can take the patient stabilized. Try my best within a week is settled with the patient collapse करेंगे क्या करूँ तो उस टाइम पे जैसे जो what they wanted to hear was पहले people had और हम करेंगे फिर उससे सिक्योर करेंगे then we will move towards tracheostomy आपकी क्या राय है ये डिसीजन डिपेंड करता है मेरा ये डिसीजन डिपेंड करता है कि आप किस सिस्टम किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तहसील हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो मैनेजमेंट वो आप बता रहे हैं कहीं सेक्टर पे आप तहसील लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है मेरे भी आप अच्छी कोई पे आप और रेड पे आप उससे जो काम करते हैं सही ये कोई होता है डॉट का तो डॉट भी छोटे छोटे काम मुश्किल होता है उसमें जो आप इलेक्ट्रिक ट्रेकोस्टमी करें इलेक्ट्रिक ट्रेकोस्टमी करें तो रादर देन ये फिर आईसीयू की वजह से काफी दिनों मॉनिटरिंग हो जाती है मॉनिटरिंग कर पाते हैं फैसिलिटीज भी होती हैं टेक्नीशियन ओवरबर्डन होता है एनेस्थीसिया का डॉक्टर अवेलेबल नहीं है इस तरह की सिचुएशन में गो फॉर ट्रेकोस्टमी उसमें हमने अगर आप टर्शियरी केयर में काम कर रहे हैं फिर हमारी को पुश करी जा रहा है तो सही फिर उसके बाद जब मैंने एयरवे का ऑफिसर पे ट्रेकियोस्टमी ऑप्शन के डायरेक्ट ट्रेकियोस्टमी ये पेशेंट की तो एयरवे मेंटेन नहीं है हम ट्रेकियोस्टमी मैंने कहा था टेम्परेरी एयरवे हम ट्रीट तो फिर पहले आप नीड ट्रीट कर लेकिन ऐसा होता है एग्जाम के लिए जब ये दिन और क्वेश्चन एग्जामिनर इज बाउंड टू आंसर के वही जवाब जब आप वही जवाब देंगे तो आपको नंबर टेस्ट कर लेते हैं ठीक है कुछ एग्जामिनर इस पर टेस्ट कर लेते हैं तो कुछ फिर एक्सपेक्ट कर रहे थे वही 4 सवाल कर रहे हैं और 4 सवाल में जवाब वही दे देंगे वही जवाब जरूर होंगे जिससे लिखो थोड़ा डॉट ये एग्जिट एग्जाम में फेलोशिप करना प्रोग्राम कन्विंसिंग ये लॉजिकली उनको कर एक बार तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऐसा आईसीयू का एनवायरनमेंट नहीं है कि बच्चों को एडमिट कर सके और ये उसमें
छोटे बच्चे के लिए पहले आप उनको सारे डॉक्यूमेंट हम अपनी रूटीन की प्रैक्टिस कैसे करते हैं डायरेक्ट ट्रेनिंग करते हैं आप डायरेक्ट इसलिए रैपिड ट्रेनिंग करें और ट्रेनिंग करके जेंटल रैपिड करें ठीक है मैं टर्शियरी के हॉस्पिटल में काम कर रहा था अवॉइड ट्रेकोस्टमी एज यस तो आपको एक्सपर्ट टीम अवेलेबल है तो आप इसको दैट ट्रेकिंग वैसे किसी का ट्रेकोस्टमी कम हो सर मैं ये उधर भी बेसिकली ये आपस में आप कहें थोड़ा सा एग्जामिन के साथ आके पी के उसमें हमने नहीं करी बट वो ये एडमिट थे कि पेशेंट के लाभ पर आप कैसे मेंटेन करेंगे तो फिर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए थोड़ी है कि आप आप 60% को हर सिचुएशन के हिसाब से वाले से आप उनके काम आते पेशेंट के प्रिकॉशन करेंगे मैं उससे अगर मैं इस तरीके से पूछूं कि अगर आप टेस्टिंग में काम कर रहे हैं देन हाउ यू हैंडल अगर आप टेस्टिंग में कर रहे हैं हाउ यू हैंडल तो फिर आप वही उसी पॉइंट की तरफ आ जाएंगे और मुझे मेरी बात करेंगे कुछ एग्जामिनर जैसे मेकअप करके आपसे पूछते हैं तो मैं आप लोगों को पॉइंट करके कुछ वो वही सवाल करते हैं जैसे वही पूरा इन्फॉर्मेशन है और आप एक्सपेक्ट करें क्योंकि हमने उसी का नंबर मिले ये काफी ब्रीफ क्वेश्चन होते हैं और ब्रीफ क्वेश्चन का मतलब ये है कि वही नहीं है कि आप किस हिसाब से आप पेशेंट का क्लिनिकल सिनेरियो होता है उसको मैनेज करते हैं अगर आपने सेफ्टी मैनेज कर दिया ठीक है जी ठीक है जी What else? और इसके बारे में अक्सर से कोशिश की अगर कोई क्वेश्चन है when I face to the enamorize of latest especially ज़्यादा होते हैं दूसरी बात ये भी पूछते थे और कभी कभार एक दोस्त पूछ सकते हैं जबकि 0.06 है रेजिमेंट की और 0.5 है ठीक है तो ये इम्पोर्टेंट है सर क्योंकि एग्जाम में ना हमारे क्या आपको एफसीपीएस या इसके एग्जाम क्या आपको एफसीपीएस या इसके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन टॉस टेस्ट करते हैं बड़े फेवरेट क्वेश्चन और इस टॉस के फोकस ये स्ट्राइक होता है या आपके टॉस पे बड़े एरियल्स टिकल साइड क्या है सब साइड क्या है ये Any question? इसलिए रिकमेंडेशन पड़ेगा और उसकी और उसमें भी नेक्स्ट मैथमेटिक्स ब्यूटी सिस्टम कहते हैं तो फिर ये है कोशिश करें कि जब भी एवरेज से ऊपर रन है तो ये चल हमारे केस से मॉडरेट केस से तो आप आई भी अवॉइड करें लेकिन आपको लग रहा है कि मॉडरेट से वेट कर जाएगा तो आप अगर नहीं से जैसे जैसे पेशेंट एक्ट करेगा ये और तो और बता दें जी विस्तार से आप एक गोल्डन रूल्स बता दें और बड़ा रेगुलेशन रूल्स बता दें not to do. Okay. Not to do. Examination period आपके बार-बार देते हैं और right effort. Right loads are taken.
आप डाइटिशियन ही है ना या और most of the time diagnosis में help करता है मैंने prevention कर रहा हूँ सही है आप diagnose कर लेते हैं कि ये भूख है वैसे फिर interventionist या anesthetist करते हैं वो ज़्यादा expert होते हैं वेट करते हैं so not to do का मतलब है जैसे investigation करना भी patient procedure management ICU के अलावा और कहीं भी ये not to use करें सबसे बेहतर उसके लिए in short obstruction की स्थिति है तो आपने वो टाइम निकाल लिया और कुछ So, family history की importance very excellent है family history क्या फैमिली हिस्ट्री का ये है कि एक पेशेंट में फैमिली हिस्ट्री रिकरेंट केसेस के रिपोर्ट हो रहे हैं तो मोर चांस है इसके आप एक सजेस्ट है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज जिन पेशेंट्स में कॉमन है जैसे कुछ लोगों को स्टमक इशू रहते हैं और वो फैमिली में ड्रग के साथ एसोसिएशन होगी प्रूव की क्योंकि स्टमक की जो एसिडिटी है वो अगर ऊपर रिफ्लक्स की वजह से हमारे एयर पे अफेक्ट करती है जैसे काफी पेशेंट्स में ड्रग की वजह से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम्स आते हैं तो उस वजह से तो कुछ उसकी एसोसिएशन आप समझ आइए एसिडिटी से ब्लड है सर वो बच्चों में कैसे सर हम डायग्नोस करते हैं तो इसके साथ डायग्नोस किसी का डायग्नोस इसकी मतलब किसी को कब क्या रात में होता है काफी तरह और इन्फेक्शन के साइन ना होना है कि बाद में कब क्या हो सकता है ब्लड में तो काफी कवर होते हैं कम्युनिकेट में ये मेंटेनेंस करने के लिए है तो शॉर्ट में ये है कि बाय थ्रेटिंग सिचुएशन so act smartly so your priority is to manage the spider or whatsoever underlying policy management plans in such auto-animation, nebulization, prospective antibiotics, treatments. Plus minus intubation, depending on the need of the patient. Quite technology as you can. When facilities available नहीं है, expertise available नहीं है, then don't hesitate to do the precaution. For an light saving agent, reversible procedure. उसकी precaution करते हैं, precaution करिए तो इसमें obviously load rate technology, but to move the rate, direct agents में फिर डालेंगे, ट्यूब डालेंगे, उससे से गुजारा इसमें ड्रिंकिंग precaution भी एक्सपर्ट करते हैं serious anesthetist or serious anesthetist को start getting so clearly or any question let's say
Sir, today we are discussing the croup and epiglottitis. So आप हमारे रेजिडेंट को कोई इसके स्मार्ट टिप्स दे दें कि आपके एक्सपीरियंस में ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल किया जाता है या इनको कोई एडवाइस देना चाहें। यू आर वेलकम। कम्युनिकेट कर पा रहे Islam sir, sir, can you hear us? आवाज कट कट के आ रही है, कोई क्लियर हो नहीं है। काफी कोशिश कर रहा हूँ। जी सर, आपकी आवाज हमें क्लियर आ रही है। ओके, मैं जस्ट अभी इंटरव्यू हुआ हूँ, मुझे अभी ज्यादा नहीं क्या हो रहा है। आपको क्या डिडंट नो अबाउट एनीथिंग फ्रॉम एक्यूट एपिग्लॉटिटिस के रिगार्डिंग। जी सर, हमारी आज की जी हमारी हमारी प्रेजेंटेशन क्रूप और एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में। जी 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 तो आपके एक्सपीरियंस में आप हमारे रेजिडेंट को गाइड करिए, कोई टिप ट्रिक्स बताइए। अगर ये स्ट्राइडस पेशेंट आ जाए, बच्चा आ जाए, सो हाउ टू सर हैंडल दीस किड्स। सर प्लीज आई रिक्वेस्ट, मुझे कोई लाइन समझ आ रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा मैं सही, क्योंकि वो या कनेक्शन का मसला है या कोई है, वो बार बार कट 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 करके मुख्तलिफ साउंड्स भी आ रही है साथ। सर, अब आपको आवाज क्लियर आ रही है? ए बिट बेटर देन प्रीवियस। जी सर, आप बेहतर आवाज। हाँ हाँ, अब आवाज आई है आपकी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी सर। जी, आज की ये मीटिंग में कौन कौन सर हैं, कौन, मुझे ये थोड़ा सा अंदाजा हो जाए ना। मैं बिल्कुल जस्ट आई इन इट, तो मैं इसलिए पूछा था कि आपकी मीटिंग में कौन कौन लोग कौन से सर, ये टीचर हमारे बैठे हमारे हुए हैं। हमारी रेजिडेंट की क्लास है, रेजिडेंट्स की। अच्छा, जी आप रेजिडेंट की क्लास है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो सो हम डिस्कस रिगार्डिंग कर योर क्रूप और एपिग्लोटाइटिस को हम डिस्कस कर रहे हैं। जी, तो क्या टॉपिक डिस्कस एपिग्लॉटिस रिगार्डिंग दैट, व्हाट यू डिस्कस इट? या वी आर discussing the management of a kid who Okay, has that is management. Typically in children, that is you undergo under age of 5 years. So management is depend on the yeah. condition of the patient. तो आपके पास किस condition में है, किस presentation उसकी क्या है? Like that is typically presented like they are sitting patient, that is voice is okay, maybe they're glottic, especially the glottis is not only epiglottis that is involved. So there is no change in voice. Only there is this strider. There are two strider is there. I just we seem not so much patient, because these patients are come to in the very close to us, the children hospital. So that's management a bit different from that of the other condition, because in this condition patient is stable when patient is sitting posture. When it is become lying, it comes worse. So this should be diagnosis should be made only on the basis of the history. Other intervention should be not done until and unless you have the full facility. So regarding this, I only say that is no doubt it is acute emergency, should be treated properly in children. It may be in adults with diabetic patient, that may be the staph is one cause of that. But in the children, that usually hemophilus that is main causative agent of that. So should we know how can you manage? Only airway. Important in this regard is the airway. You can manage airway. So I may say that is the daily life I seen, that is the airway is very first importance. When you stable it, then no problem for that. Anything regarding management treatment policy is same like the other infection, but only difference is that is a proper way how can manage the patient and airway of the patient, so you can treat it like that. Okay, thank you.
Thank you very much, sir. सरफराज Very सॉरी good. सॉरी माइंड ना करना, नहीं, मेरी नहीं, क्लास जो है वो आ चुकी है, मेरा लेक्चर है, तो मैंने लेक्चर भी अभी लेना था, तो भाई चांस आपकी आ गया था मैसेज, तो मैंने कहा कि सरफराज को हेलो हाय तो करना मैं लाजमी नहीं, मैंडेटरी है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे टिप्स बताए, यानी कि आपने इतना बताया कि हमें एयरवे को मैनेज करना है, ये इसकी की टू मैनेजमेंट है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और बताइए। ठीक है, तो उनका ये था, उन्होंने कहा कि ये नहीं होता है, एपिग्लोटाइटिस नहीं सिटिंग पोजीशन नहीं होगा, जो भी रिलेटेड हम यही करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। मैं बैठा तो मुझे नहीं पता, तो सरफराज साहब ग्रेट, वो अपनी वो we are and we must be trained to handle the airway problems. So जब airway problem हो जाएगा तो most of the time ये disease तकरीबन treat हो चुकी है। So second उनकी जो input थी हमारी presentation के बारे में, ये थी treat the patient। डिपेंड करता है कि अगर पेशेंट वाइडली डिटेक्ट होता है, सिचुएशन मेंटेन नहीं कर रहा है, तो आपने इसको वेट कर लीजिए, ट्रिकर्स को अवॉइड करिए, पर करके रेस्ट्रिक्टिव सिस्टम और अगर आप फैसिलिटी में देन अवॉइड द ट्रिकर्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सामान फॉर arranging all the management and presentation, Dr. Aksar, very good presentation. So अब हम नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग में हमारी क्लास होगी, उसका हम शेड्यूल अपडेट कर देंगे वेरी सून, थर्सडे मॉर्निंग। खुद को हम इसका टॉपिक और शेड्यूल